Okay, let's start the lecture now. So we were discussing orthonormal sets. उस वीडियो लेक्चर Yes. में जो आपने सेंड किया वो पूरा लेक्चर है उसमें। हाँ, that's वो पूरा lecture है. So हाँ हाँ बताइए आप. वो आज सर वो आधी सर आप आधी मीटिंग छोड़ कर गए थे ना, वो आप एग्जिट हो गए थे ना उसमें। हाँ, एग्जिट हो गए थे, सारे लोग एग्जिट हो गए थे आधी मीटिंग में ही. बेसल इनइक्वालिटी आपने कंप्लीट नहीं की थी शायद, उसमें हमने सिर्फ स्टेटमेंट बताया था उस टाइम आपको, तो फिर वो डिस्कनेक्ट हुआ था, है ना. यस सर। सो मगर लेक्चर मैंने पूरा वो रिकॉर्ड किया है, वो पूरा लेक्चर है वहाँ पर ना. और वो सर हाँ सर क्या आप आज वो फिर से यहाँ रिपीट कर सकते हो? अच्छा, बेसल इनइक्वालिटी. यस सर, हम पहले पहले थोड़ा वो वीडियो देखेंगे अगर शाम हो जाएगी। नहीं, अगर आप बताना, अगर मैं करूँगा रिपीटेड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर रिपीट ही करें। ओके ओके, कोई बात. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ बेसल इनइक्वालिटी. Bessel's inequality. So let's take this countable orthonormal set. So let u1 u2 be a countable orthonormal set. Be a countable orthonormal set in an inner product space X. In an inner product space X. Okay, and X is an element in X, then this always holds. This inequality then summation n runs from 1 to infinity inner product mod of the inner product X with un its square is less or equal to norm X square. Okay, this is the inequality, and the equality holds where the equality holds if and only if this X is equal to some n runs from 1 to infinity series inner product of X with un, then this is u here. So this is the Bessel's inequality. Okay. Proof. So let's first define the following vector. For each m we define a vector xm. Okay. for each m runs from 1 to infinity, we define the vector xm. Okay, this is the summation, finite sum, n runs from 1 to m. Okay, inner product of X with un and un. So this is a vector in H. Okay, so these are scalars. Inner product of X with un, they are in K. Let's say it's a linear combination of these un's. Okay, n runs from 1 to n with scalars inner product X un. Okay, for each m you define this vector xm. Now let's calculate this. Now we calculate the inner product of X with xm. Okay,
Let's calculate this inner product. This is equal to what's xm? It's x. Okay, it's x. Then xm is sum and runs from 1 to m. Inner product x un, then un here, right? आप इस सब को एक्सपेंड कर सकते हो, फिर आप इनर प्रोडक्ट को भी एक्सपेंड कर सकते हो बिकॉज इनर प्रोडक्ट इज लीनियर इन द सेकंड कंपोनेंट आल्सो. सो दिस इज इक्वल टू, या डायरेक्टली आप सम लिख सकते हो, सम समेशन, या पहले आप इसको एक्सपेंड कीजिए अंदर. दिस इज इनर प्रोडक्ट x u1 प्लस इनर प्रोडक्ट x u2. We can thought these scalars as it's alpha 1 u1, alpha plus alpha 2 u2. They are all scalars, okay? Plus last vector, last scalar is alpha mc. So this is your scalar, okay? X um, then this is the vector um, okay? Now you apply this linearity property, second variable, this inner product of x with the first one, which is x u1, then u1, okay, plus inner product of x with the second vector, which is x inner product x u2, then u2 plus the mth one, this is inner product of x with x um, right? अब ये जो स्केलर्स है ना x u1, ये बाहर आ जाएगी इनर प्रोडक्ट से, बट विद कंजुगेट, क्योंकि ये सेकंड जो कंपोनेंट है, सेकंड वेरिएबल जो है ना, उसमें उसके साथ ही स्केलर है. ये सारे स्केलर्स x u1, x u2, x u3, ओके. So they are equal to, this is equal to, ये स्केलर पहले बाहर आ जाएगा, it's x u1 with conjugate, okay, then it will be x u1 only here, the first one. Okay, see it again here, इस स्केलर को मैंने बाहर निकाला with conjugate, x u1 conjugate, अंदर जो रहा वो that's inner product x u1 only. इसी तरह से यहाँ से भी स्केलर बाहर आ जाएगा, x u2 conjugate times inner product x u2, so plus x u2 conjugate x u2, okay. इसी तरह से जो mth टर्म होगी इसकी, that's x um conjugate x u1, okay. So this is the product of a complex number, a scalar with its conjugate, okay. So that's equal to the mod, okay, it is mod of the scalar with square plus mod of the scalar with square plus mod x um with square. So that's equal to summation. You can write it as sum n runs from 1 to m x u1 x un, sorry, it's x un, okay, this is x un whole square. So what's this? This is inner product of x with xm. So this number is greater or equal to 0, so it's a real number, therefore
Therefore this means also this x inner product of xm with x वो भी इसी के बराबर आ जाए because that's equal to the conjugate of the above number. It's a conjugate of this xm, but the conjugate is the same as the number is a real number. जो inner product है ना ये real number आ गया, so its conjugate is same, so it's same as x xm, and that's equal to summation, both are same, okay, and runs from 1 to m mod x with u n whole square. तो ये दो चीज़ें आपने कैलकुलेट की, इनर प्रोडक्ट x with xm and inner product xm with xm, both are equal. Next we calculate the inner product of xm with xm. We will see that is also same, वो भी इसी के बराबर है. So also this thing, inner product of xm with xm, let's expand the both things. Can it do it is summation, it's summation and runs from 1 to m x u n u n, the second vector is same, and runs from 1 to m x u n u n, right? These two. Okay. So if you expand first this one, it's xu and u and xu2 u2. Okay, then this will be xu1 conjugate. Okay, xu and then okay. So let's expand it, so that waste time. It's inner product x u1 with u1 plus inner product x u2 with u2 plus inner product x um okay. Then second one is same, the same vector x u1 with u1 plus x u2 with u2 plus x this okay. So this is the inner product of first vector with this sum, okay. This is inner product of first vector. What's first vector? That's inner product x u1 with this whole sum, okay. उसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं आपके लिए एक्सपेंड कर रहा हूँ, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल. Plus inner product x with um okay, then plus the inner product of second vector, okay, with this sum. What's second vector? That's x u2 its inner product with this sum, which is x u1 plus x u2 plus x okay, plus dot plus the mth term, its inner product x the inner product of this vector with the sum, which
inner product x u1 u1 plus inner product x u2 u2 plus inner product x um um. Okay, this one. Let's look at this first inner product. Okay, this one. Let's look at this one. इसमें से ये जो है ना स्केलर सब बाहर आ जाएगा, एक्स यू वन इनर प्रोडक्ट और एक्स यू वन कंजुगेट बाहर आ जाएगा, अंदर इसमें रहेगा यू वन प्लस इसी तरह से फिर इसके साथ यू वन यू टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वन यू टू, वो सारी जीरोज आ जाएगी, यू वन यू टू यू वन यू थ्री यू वन, बिकॉज यू वन ये जो है ना यूज का जो सेट है, इट इज़ एन नॉर्मल सेट। सो जब आप इसको अब एक्सपेंड करोगे, फर्स्ट जो आपका इनर प्रोडक्ट है, इसको जब आप इस सम को जब आप एक्सपेंड करोगे, इस टर्म का इनर प्रोडक्ट हर किसी के साथ इंडिविजुअली आप लोगे, इसमें सिर्फ फर्स्ट टर्म रहेगी, बाकी जो भी टर्म्स है ना, क्योंकि उनमें इनर प्रोडक्ट यू वन यू टू होगा, यू वन यू थ्री होगा एंड यू वन यू एम, वो सारी जीरो के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप सेकंड जो इनर प्रोडक्ट आपके पास है एक्स यू टू दिस वन एक्स यू टू, इसका इनर प्रोडक्ट फर्स्ट वन के साथ जीरो आ जाएगा क्योंकि उसमें यू वन है, सेकंड के साथ तो नॉन जीरो आ जाएगा क्योंकि उसमें यू टू है, यू टू इनर प्रोडक्ट वो वन के बराबर है, और बाकी जो भी है वो जीरो आ जाएगी। मतलब सिर्फ ये डायगोनल एंट्रीज रहेगी, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ रहेगा इनर प्रोडक्ट, इसी तरह सेकंड का साथ रहेगा, बाकी सारी जीरोज आ जाएगी, नॉन डायगोनल सारी जीरोज आ जाएगी। सो इट्स इक्वल टू, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा साथ साथ स्केलर्स को भी बाहर निकालूंगा, इट्स इक्वल टू इनर प्रोडक्ट x विद u1 इनर प्रोडक्ट x विद u1 इसका कंजुगेट रहेगा एंड देन u1 विद u1 प्लस, अभी मैं फिलहाल फर्स्ट वाला एक्सपेंड करता हूँ, इनर प्रोडक्ट x विद u1 और इसके साथ इनर प्रोडक्ट x विद u2 इसका कंजुगेट, देन इनर प्रोडक्ट u1 u2 प्लस इनर प्रोडक्ट x u1 x um then u1 um, ओके, इट्स कंजुगेट हियर। ओके, तो ये पहला इनर प्रोडक्ट जिसको मैंने एक्सपेंड किया है, प्लस इस तरह से आप सेकंड इनर प्रोडक्ट को एक्सपेंड करोगे, तो उसमें क्या है सेकंड इनर प्रोडक्ट में, तो फर्स्ट में मैंने कर दिया एक्स यू वन और एक्स यू वन कंजुगेट को बाहर निकाला, इट्स यू वन विद यू वन, इसी तरह से एक्स यू वन और एक्स यू टू कंजुगेट बाहर आ गया, अब अंदर जो वेक्टर्स है वो यू वन और यू टू है, सो इट विल बी इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वन विद यू टू। नाउ लेट्स सी द सेकंड वन। सो फर्स्ट कंपोनेंट में जो स्केलर है वो एक्स यू टू है और सेकंड में जो है वो एक्स यू वन है, सो इट्स एक्स यू टू तो सीधा ही बाहर आ जाएगा, बट द सेकंड इट्स अ कंजुगेट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड variable, so that means it will be x u2 then x u1 conjugate and then we have u2 u1। okay, इसी तरह से सेकंड के साथ भी वही, so it's equal to inner product x u2 x u1 conjugate then u2 u1, okay, plus x u2 and x u2 conjugate and u2 plus जो लास्ट टर्म है दैट्स x u2 x um conjugate, okay, and then u2 um, okay, प्लस जो फाइनल है दैट्स द mth टर्म, उसमें क्या होगा x um and x u1 conjugate inner product of um with u1 plus x um and x u2 conjugate inner product of um with u2
प्लस जो mth टर्म उसमें रहेगी that is x um, it will be here now x um conjugate, then it is equal to 0. So this um. So now let's look at this first one. It's x1 conjugate, that's mod of, and u1 is equal to 1. Okay, so this one is the complex number and product of complex with its conjugate, so it's some mod inner product x1 square plus this term will be 0 because this one is 0 plus 0. Okay, that is the first one. Plus second one, इसमें पहली टर्म 0 आ जाएगी और जो सेकेंड टर्म उसकी होगी वो होगी मॉड इनर प्रोडक्ट x u2 स्क्वायर. ओके, प्लस जो बाकी टर्म्स होगी वो 0 होगी उसमें भी. और इसी तरह से जब आप mth टर्म पर जाओगे वहाँ पर पहली सारी टर्म 0 आ जाएगी और जो लास्ट टर्म होगी वो होगी ये x u m square. A reason as this set u1 u2 is orthonormal is orthonormal. Okay. So इसमें x1 square, then x2 square, and then finally we have x1 square. So it's equal to summation n runs from 1 to m inner product mod x u n square. तो सारे इसी के बराबर के 10 we have this inner product of x with xm is same as inner product of xm with x is same as inner product of xm with xm. All are equal to summation n runs from 1 to m inner product x with un whole square. Now let's see this. We have 0 which is always less or equal to norm x minus xm square. This is true. Norm is always greater or equal to 0, but the norm is actually the inner product here xm x minus x. Now you expand it, it's inner product of x with x minus inner product of x with x, then x with xm. Okay, इसी तरह से xm with x and then minus minus plus inner product of xm with xm, but last three they are all equal है ना, ये सारी equal है तो ये तो cancel हो जाएगी. It's just inner product of xx minus xxm. What's inner product of xx? It's norm x square. Okay, and what's inner product of xxm? That you have already seen here. Okay, name it 1. This is this cancellation is also by 1 because from 1 they are equal. Okay, and this one is also by 1 because this inner product x xm, this is equal to summation n runs from 1 to m. Okay, this is x u n square, so this is again by, so this difference is greater or equal to 0. So इस जो माइनस टर्म है इसको अब यहाँ लेफ्ट साइड ट्रांसफर कीजिए. So this gives summation n runs from 1 to m. This is the inner product here. Inner product x with un whole square is less or equal to norm x square, letting m. This is true for each m. Okay. So letting m approach to infinity, this gives summation n runs from 1 to infinity inner product x with un its square is less or equal to norm x square. So that was the inequality. Okay, now we prove equality if and only if this x is equal to the sum. Okay, that's
So now assume that now so if equality if equality holds, that is we have this summation n runs from 1 to infinity 1 to infinity, okay, 1 to infinity, its inner product x un mod square lesser, so that's equality here. Equality holds, it's equal to norm x square. So equality holds, that means that means we have then 0 equal to norm of x minus xm square, fact, that is that's limit m approach to infinity, okay, this norm of x minus xm square is equal to 0, क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू 0 था ना ये लिमिट, तब जाके हमारे पास इनइक्वालिटी आई था। अब अगर इक्वालिटी होगी सो दिस इज सेम थिंग, अगर आप इसको यहाँ ट्रांसफर करोगे ना, इट्स एक्चुअली नॉर्म ऑफ दिस, ओके, नॉर्म दिस स्क्वायर। अब नाउ अ नॉर्म इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ओके, सो दिस इज नॉर्म x minus limit of xm, its square is equal to 0. Now it's norm of some vector which is equal to 0, which means that the vector is itself equal to 0, so that means x minus limit of xm is equal to 0, which means that x is equal to limit of xm. So what's xm? Xm is the sum and runs from 1 to m, and that in m approaching infinity it will be n runs from 1 to infinity, okay, it is this x un then un. So x is equal to sum n runs from 1 to infinity inner product of x un, then this un factor, okay, this is the multiplication of this scalar x un with vector un. So if the equality holds, then x is of this type, then x is this series. So conversely, if x is equal to this series, conversely if x is equal to the series n runs from 1 to infinity inner product x un, okay, we need to prove the equality in the Bessel's inequality, okay. So we have, let's see this norm x square, we need to prove that this norm x square is equal to that sum, okay. This is by inner product property, it's inner product of x with x, that's equal to what's x? X is this sum, summation n runs from 1 to infinity x un summation n runs from 1 to infinity x un, okay. But what's the sum actually? What's the definition of this series? This is actually this limit m approach to infinity summation n runs from 1 to m inner product of x with un, okay. This is a limit m approach to infinity, this is summation n runs from 1 to m inner product x with un, then un, okay. इस लिमिट को बाहर निकाल सकते बिकॉज इनर प्रोडक्ट इज कंटिन्यूअस with respect to this limit operation, its limit m approach to infinity, then this will be, what's this actually? This xm, and this is also, and this you have seen, it's
it's a summation m approaches to infinity. This one is summation n runs from 1 to m inner product x with un square. So this is equal to summation n runs from 1 to infinity mod of x un square. So that's the equality. Okay. That's our equality. Now the next theorem, it has two parts. The first is the regarding the convergence of scalars, and second one is the Rees-Fisher theorem. So both are very simple. नेक्स्ट थ्योरम। सर कुछ मिनट्स में मीटिंग खत्म होने वाली है। ओके, क्यों? इसमें सर इसमें लिमिट वो ओके टाइम लिमिट है। आप आई डोंट ओके 40 मिनट्स। ठीक है, कोई बात नहीं। सो लेट x be an inner product space. Let x be an inner product space. Okay, this one is an orthonormal set u1 u2 so I think we continue this lecture tomorrow. Okay.